नमस्ते भ्राता। नमस्ते। कैसे हैं? सब ठीक क्या हाल चाल? चल रहा है। काम चल रहा है। कुछ वजन बढ़ाया है आपने? अरे तो पहली बार जब घटाया था तो ट्रेनर ने कह दिया, क्या कर दिया, पूरा मसल लॉस हो गया, हाथ इतने वीक हो गए। एज योर एज गोज अप अपेरेंटली यू आर सपोज्ड टू डू मोर वेट ट्रेनिंग टू कीप योर हार्ट इन गुड शेप। सो शी सेड आप थोड़ा वेट ट्रेनिंग शुरू कीजिए। सो ये जो नतीजा है उन्हीं का है। तो अभी क्या क्या कर रहे हैं आप? बता रहे थे आप कुछ अच्छी चीजें। स्टैंडर्ड कन्वेंशनल ट्रेनिंग तो है ही। हाँ। उसके अलावा सम पीपल हैव टेकन एन इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग मी इन इंडिक फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। सो कलरी इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। काफी इंटरेस्टिंग है। इट इज इंटरेस्टिंग एंड इट्स एक्सट्रीमली एग्जैक्टिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट बोरिंग। जिमिंग में जो है एक कुछ लोगों को सुना नहीं होगा, फिर से बता दीजिए। मतलब नॉर्थ इंडियंस को तो नहीं समझ में आया होगा। So Kalaripayattu is supposed to be the mother of all martial arts. That's the traditional belief, and it is believed to have been founded or started by Parashuram. And importantly, like any other Bharatiya art form, इसके ट्रेनिंग सेंटर में एक कॉर्नर होता है which is specifically dedicated to देवी. I think it is Bhagavati. And you start with a worship. So एक वंदना के स्टार्ट शुरू करते हैं and there are many levels. I am barely a beginner. तो कितना आपके ट्रेनर ने कितना बताया कि कितना समय लगेगा इसमें? No, so it's first of all you're a lifelong student. अच्छा। That doesn't change. It's a question of how much you're willing to learn from your guru. I'm being trained by people from Hindustan Kalari Sangam, who actually are among the oldest and who resumed their work, so to speak, after the British left, because until then they were banned significantly. When Arms Act के साथ ये सारा सब कुछ बैन हुआ था। ये भी बैन कर दिया था? Yes, martial arts were banned. अच्छा। Yeah, but इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ना? अरे this is extremely lethal. Extremely lethal. They had guns, man. No, please. In fact, I think from pop culture you can draw a reference. Indian देखा है कमल हासन का? नहीं, मैं भारतीय. This is his movie that released in 1996, produced by Shankar. अच्छा। This is based on a freedom fighter who actually knows this Kalaripayattu. These people were banned across the country. Keeping of weapons, everything was banned, and even the practice of this art was banned. So these people, how they revived the entire tradition along the entire coast, what I would call the Parashurama Kshetra, starting from Konkan to नीचे मलबार तक कि पूरा परशुराम क्षेत्र है। तो वहीं पे आपको ये सारे कलरी के गुरुकुल्स मिलेंगे। So last year, the fag end of last year, I just wanted to somehow do something from a fitness perspective, which was also more engaging. Because gymming is boring beyond a point, at least for me it's like that. That's true. I need a sport or something else to be more interested in it. So a good friend of mine actually suggested this, and fortunately the gurus were also keen, and they had followed my work in the past, and I had the good fortune of meeting them at the Pondi Lit Fest in 2019. So Lakshmanan Guru, that's the name of the Guruji. And it is his niece who is actually training me, Revati Ji. And I'm grateful to both of them for taking the time out to specifically dedicate some time for my training, because usually you have to go there. ये जिम ट्रेनिंग नहीं है कि आप कभी भी कॉल करके बता दो कि मैं अभी तैयार हूँ, अभी आ जाओ. That's not the way to go about doing this. It is a specific Guru Shishya Parampara which you have to respect. So Revati Ji has been kind enough to accommodate my erratic schedule. In the last few months, I've been writing. 6 months or so, I've been extremely busy with writing. तो उस दौरान एक स्टेज आया था जब दिमाग पूरी तरह से it was occupied so much with work and this that I had to say that I was struggling with getting enough sleep. So this is early in the morning. For me, 7 a.m. is early. It's difficult for me to wake up at that time because I typically sleep at about 2:33. Before that, it's very difficult for me. So considering that, I requested them to give it a brief pause and say that I'll resume once the book is done. They were kind enough to accommodate all of this. So hopefully, let's say after the 15th of August, again I resumed that particular training. So this is where it is.
Now, the good part is the conventional training focuses significantly on strength, on endurance and stamina. Obviously, because it happens to be an Indic form of an art, so to speak, you're looking at a combination of yoga. Surya Namaskar is an integral aspect of this particular training. In addition to that extreme flexibility, conditioning, these are requirements. I'm not saying I'm capable of doing all of that. Let's be very clear. Okay. नहीं अभी तो 6-7 महीने ही हुए हैं. Yeah, barely. And this is what has actually kept me, how do I put it, in decent shape, notwithstanding my schedule. I'm getting back to my workout routine. Hopefully, I started doing it again 2 weeks ago. I said book launch आ रहा है, तो उनके साथ तो नहीं जा सकता, कुछ तो करना पड़ेगा. I have to get back to it, because one of the things that you realize is it's not just about eating a lot that creates a punch. You sit at a place, and then the posture and your inability to tuck in your tummy is the reason that it starts protruding. That's why it becomes lambodar. Lamba udar ban jata hai. Okay. So you have to work only on that. So I've started my routine. I have a specific training regime in mind and a specific goal in mind. I hope to reach it before the 23rd of August. लेकिन दिखने में तो मतलब 3-4 किलो का ही फर्क है, ज़्यादा नहीं. हाँ है, but the thing is, each of these kilos, you will realize its impact during the course of the training. Okay, केक को कम करने में. Yeah, you will regret क्यों किया. Why couldn't you have said no to this? And especially my brother's wedding took place just barely a month ago. So it's a southern wedding. It's rice heavy. Okay, plus I deserved the break after having worked so hard for my hearings as well as for the book. I've not had a break at all. I hope to take a vacation for at least 4 or 5 days during the Independence Day vacation, or the break, so to speak. So I जरूरी है, नहीं तो दूसरी क्लास लगेगी. Exactly. I need to recharge my batteries, plus I need to keep people at home happy as well. Yeah. So उस दौरान, उस शादी के दौरान, my brother said, if you come here and do this नौटंकी, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, it's not happening. I am eating, you have to. You can't look better than me. I said, okay, done. There's no way in hell I can look better than him. Yes, the conventional good looks. I'm not made that way. But still I said, okay, ठीक है, खाएंगे. We'll do all that. So now I'm having to compensate for all of that. कलरी में जो आपने एक बात बताई कि किस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा एक मार्शल आर्ट्स है. It could have been secular also. Right. But because it is Indic, वहाँ पे भी रिलीजियस एस्पेक्ट उसमें डाला गया है. तो ये एक सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, हर चीज़ में आप देखेंगे तो म्यूजिक में भी है, डांस फॉर्म्स में भी है, हर चीज़ में जो एक तरीके से हमारा रिलीजियस एंगल जो ऐड करने का. करेक्ट. मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज हम भूल चुके हैं. इसका सेक्युलराइजेशन एक्चुअली हो रहा है. दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स. One of the primary reasons that the Guruji and I happened to meet and converse on the sidelines of the Pondi Lit Fest in 2019 was that he raised this issue saying, how do we address this problem? I said, there are some perhaps soft ways of doing this, but I think what you will need at the end of the day is a centralized quality control structure. So for instance, when you go for karate or whatever it is, you have the Budo Koi, this Koi and that Koi, where they have a certification program. Now, whether you like it or not, you have to go by the quality standards, which includes the traditions of the particular art. Those rules and that particular approach may have to start applying here. But you see, at the end of the day, what are the common principles that you're looking at? तो art form का एक deity होता है. वहाँ से that will be the first guru. From there you have a physical guru. So here in this case it's Parshuramji, and then the tradition follows. So typically communities are created around that particular tradition. अब आप इसको जाति based communities कहें या vocation based communities कहें, जो कुछ भी हो. I am not an expert on that particular subject, but the understanding it that there are certain groups and identities that are formed around it. Okay. Plus, you try and ensure that because it's treated as a sacred art and it is also dangerous in a particular way, you don't just go about dispensing it to anyone who's asking for it. शुरू कर दिया यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर. So if you recollect, when Bruce Lee wanted to teach Kung Fu in the West, the traditional masters of China actually opposed him. Achha. Yeah. He had to literally prove his worth, and I think there was a duel in Los Angeles or San Francisco where he had to fight, and then
prove his worth to start imparting this to the Westerners, because two things. Chinese had a serious problem with this being taught to the white devil. Okay, that's their way of looking at it. So it's easy to reduce this just to ethnocentric concerns. But more than anything else, they are saying, भाई अगर कोई ऐसे रेस से आता है जो 6.5 फीट का हो, ठीक है, और आपको खुद की रक्षा करनी हो, और जो एकमात्र आपके पास ऐसे आर्ट फॉर्म्स हो, आप ये भी उनको सिखा देंगे, then what do you do? Look at it from that perspective. True. Right? At least whether you like it or not, I'm not someone who's an expert in anthropology, I have no idea. All I'm saying is, one way of looking at it is, martial art forms are ways of trying to use your strengths and the weaknesses of the other side, particularly when you know for a fact the other side perhaps outranks you when it comes to heft and bulk. Then how do you find weak points? How do you protect yourself and how do you hurt the other guy? तो ये आप अगर मिठाई की तरह बांटते फिरेंगे, then how do you protect yourself as a community? Perhaps that is one of the ways of looking at it. Maybe. I don't know the history of it. So communities are created, and most importantly, एक ऑनर कोड आता है जो ये सीखता है कि हो सकता है कि आपके हाथ में जो ट्रेनिंग है वो लीथल है, कुछ भी हो, बट आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए. इज द बेसिक अटेम्प्ट एट इंस्टिलिंग अ सर्टेन डिसिप्लिन. सो whether it's the vandana or the constant need to respect the position of the guru regardless of the gender. I am being taught by a lady. So, and I suspect that the lady perhaps may be younger to me in age. I don't know the exact age, I don't need to know. But that doesn't matter. If the person is in the position of a guru and you have chosen to surrender to them to learn something, then साष्टांग नमस्कार करेंगे, आप वहीं पे पड़े रहेंगे. That is the Bharatiya way. I don't see this as oppression. I don't see this as power imbalance. So I understand where what happens. ये करना ही पड़ेगा. कर्नाटिक संगीत हो या फिर let's say any शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत for that matter, और any Indic tradition, ये करना पड़ेगा. और for that matter ये स्थपति का जो काम होता है विश्वकर्मा कम्युनिटी में, ये भी होता है. This is exactly how it is almost done. The only difference is perhaps there that आपके पहले गुरु आपके पिताजी होते हैं, because that goes from family, I mean, father to son, it goes on. So considering that, I think learning an Indic form of whatever nature, whether it's art form or let's say martial art form, कुछ भी हो, it's an initiation into the Indic style of learning and knowledge protection system. इसका dissemination कैसे होता है? I hope all of us pick up at least something, at least one in our lifetime. और कुछ तो मतलब सीखना चाहिए इससे भी, rather than secularizing everything. Correct. We had a tradition of making religion into inserting that into everything. Correct. So totally opposite direction. जी. Anyway, you have written the book. It has gone for publishing. जी. तो पहला सवाल तो उस पे मैं ये पूछूंगा कि हरा रंग क्यों डाला? कवर जो है पुस्तक का वो हरा है. और all I have to say is मार डाला. People have been asking this question. आपने पूरे भारत को और वो भी अखंड भारत को हरा कर दिया. ये क्या कर दिया? So I said, see, at the end of the day, given our pluralism and diversity in terms of sheer options available to us, हमने ऐसा कोई रंग छोड़ ही नहीं रखा है जो हमारा नहीं है. Okay? आपने ये मन में बिठा लिया कि ये रंग उनका हो गया and you have allowed someone to appropriate it. ऐसा नहीं है. हरा भी अपना है, नीला भी अपना है, केसरिया भी अपना है. All of these belong to us. जो हमारे बाद आए हैं, they have no other option but to take from us. We are first past the post. Okay? Under no circumstances can that be disputed. And as far as hara is concerned, it has a specific, from whatever little I understand, has a specific connotation to Devi. Achha. Okay, but more than anything else, what does it symbolize? So last time I said that blue effectively symbolizes infinity, Anand. Here, green symbolizes energy, growth and abundance. तो भारत जब विश्वगुरु बनना चाहता है, also symbolizes three qualities that symbolizes something else also. Growth, abundance, energy also. Energy. Okay, so think of this as your response mechanism. Okay, and most importantly, this rang is important because when you look at
ग्रीन एज अ कलर इन जनरल, आप इसके साइकोलॉजी को थोड़ा पढ़ेंगे, it obviously is a reference to virility and it also is a reference to nature. Okay, so for Navratris, from whatever I understand, for each day, for each रूप of the Devi, हर दिन के लिए एक रंग होता है और उसमें से एक रंग हरा भी है, येलो है, भगवा है या केसरिया है, हरा भी है, so everything is there. So I thought this would be a fantastic way of let's say taking back what you have a legitimate right to claim. So that was one reason. And second, I did not use green because there was a reference to Pakistan. Okay, if you look at the map that I've used here, I've referred to Akhand Bharat. आप भारत के civilizational boundaries को if you go by Radha Kumar Mukherjee or let's say R.C. Majumdar, you identify it on the basis of हमारे क्षेत्र कहाँ पे हैं, sacred geography. Sacred geography. तो जहाँ जहाँ पे शक्तिपीठ है और जहाँ जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वो हमारे हैं. So you have Hinglaj Mata in Pakistan, right? Or in Balochistan for that matter. According to me, that's our place. Dhakeshwari, Dhaka, that belongs to us. Okay. And you have Kshir Bhavani in Kashmir, belongs to us. Bhagavati in Kerala belongs to us. Madurai Meenakshi belongs to us. Kanakadurga in Vijayawada belongs to us. Mumbai Devi in Mumbai belongs to us. आपने ईरान तो छोड़ ही दिया जहाँ से हम आए हैं. So I would say at the very least आपके जो boundaries हैं before the Shahis of let's say of the Afghans fell to Islamic conquest, ये तो आपके हुए. Okay, so the idea was to basically say all of this is you constantly look at Akhand Bharat only from a saffron perspective. आप उसके पीछे का जो अर्थ है उसको समझने की कोशिश कीजिए. आपके मार्कर्स क्या होंगे? मार्कर्स ये होंगे. Hence the green. And the title of the book, जो सैंडविच सिविलाइजेशन आपने यूज किया है, इंडिया पाकिस्तान, वो क्यों? बिकॉज इट्स इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान. कुछ लोगों का ये पूछना था कि इतने फॉर्मल बुक में आपने सैंडविच्ड वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, उसका प्रयोग क्यों किया. आई लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स. आई कुडंट फाइंड समथिंग दैट वाज हिटिंग और दैट वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट. सेकेंडली, भारत जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फंसा हुआ है मानसिक तरीके से देखेंगे तो. The idea is to say that the Bharatiya consciousness is stuck between either European or Europeanized dual consciousness or the Mughalized consciousness, okay, which is not able to break free and say, sorry, I wish to assert myself and at least identify my position very clearly. The ability to call a spade is significantly impaired by the presence of dual colonialities, which is the essence of the book. Chapter 6 of the last book, I had introduced the concept of Middle Eastern coloniality while discussing European coloniality, saying भारत के सिलसिले में या संदर्भ में जब आप coloniality की बात करेंगे, unlike Latin America, you have to speak of both Middle Eastern coloniality and European coloniality. So that's effectively what the idea is behind the title of this book. And the reason why this becomes extremely crucial and relevant to the timeline that I've discussed in the book is आप देखेंगे how the first book spoke of the Christian or European line, so to speak, as far as Bharat's history is concerned. How did it go and merge with the Middle Eastern line or the Islamic line? And दोनों का dual impact क्या होता है, असर क्या होता है भारत के let's say मानसिकता पे और उसके constitutional thought, संवैधानिक thought पे क्या हुआ. That is more or less what I'm looking at. So therefore, without giving away too much as far as the book is concerned and without too many spoilers, this would be the sum and substance of the book. इस thesis को मैंने support किया है with very specific landmarks in the form of a continued narrative. तो ये लगभग 1900 कुछ में जब आपका 1907-8 तक जब ये मेरे ख्याल से जो पहली पुस्तक है वो 1920 तक जाती है. करेक्ट. और उसके बाद से या उससे थोड़ा सा पहले शायद आपकी ये दूसरी पुस्तक शुरू होगी और 47 तक जाएगी. तो दूसरे पुस्तक को मैंने पूरी तरह से बदल दिया है. दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया. ओरिजिनल ये था. एंड
मैंने अभी इसको वापस खींचा है 1740। अच्छा, 1740 वो क्यों खींचा, वो तो चलो पढ़ेंगे। पढ़िए 1740 ही क्यों? 1740 क्यों? वंस यू रीड you'll know। 1740 को मैंने एक पृष्ठभूमि के तौर पे इस्तेमाल किया है। 1740 से लेके 1905 तक। पहला बुक जो है 1919 में जाके खत्म होता है, टचिंग 1920 ऑलमोस्ट। दिस बुक uses 1740 to 1905 as the background एंड फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके आगे बढ़ता है। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल को आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे ठीक तरीके से जब तक आप 1740 से लेके 1905 की हिस्ट्री को ठीक से समझ नहीं पाते। पानीपत से भी पहले चले गए आप पूरी तरह से। यू विल फाइंड रेफरेंसेस टू ऑल ऑफ दिस एंड आई हैव मेड श्योर दैट जब भी हम भारत के पार्टीशन की बात करें या फिर संविधान की बात करें, इस हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये और भी ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है और भी प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री है जो हम बात नहीं कर पाते उसके बारे में। तो 1740 से लेके आई कैन गारंटी वन थिंग फॉर अ फैक्ट, एंड दिस इज नॉट पफरी और बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट इन द होप ऑफ सेलिंग द बुक। हर पुस्तक की अपनी एक नियति होती है, ये बिकेगी या नहीं बिकेगी, somebody has already written it, so my statements will not make any difference. All I can say is that people will start seeing Bharat's modern history and pre-modern history, modern and pre-modern history in a very different way after they read this book. ये विश्वास है आपको? 100%, because my own research and my own, let's say, experience of putting myself through the process of writing this book opened my eyes to such an extent कि आपके heroes कौन हैं, आपके villains कौन हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब ये जो है डिसमेंटल हो जाएगा अपने अंदर। लेकिन जब आपने ये लिखना शुरू किया और जो पहले प्लान था इसका पुस्तक का, ये नहीं था जो अब बना, करेक्ट, तो आपने ऐसा क्या देखा उसमें अपने रिसर्च के दौरान जो आपको लगा कि नहीं, यहाँ से नहीं शुरू कर सकते हैं बल्कि 1740 या उससे पहले जाना पड़ेगा, 1900 में हम शुरू नहीं कर सकते हैं? Man proposes, Bhagwan disposes. Okay. I had a certain plan. अक्टूबर लास्ट ईयर मैंने इसको लिखने का जो कार्य है शुरू किया था, लेकिन 2 महीने तक 2000 वर्ड से ज़्यादा मैं लिख नहीं पाया। अच्छा, आगे ही नहीं बढ़ रहा था। दिसंबर तक I'm like, आगे नहीं, क्यों नहीं बढ़ रहा है? What is the problem? Problem was कि मैं एक jaded पोजीशन में अटक गया था। Okay, I don't know what is the अनुवाद for jaded in Hindi. I got stuck. वैसे भी आप इतनी अंग्रेजी बोल रहे हो, लोग बोलेंगे कि नीचे सबटाइटल्स लिखो हिंदी में। I was stuck in a place and I was wondering कि इसको आगे कैसे लेके जाऊँ। Not that research नहीं था, but something was missing. Story नहीं बन रहा था। The narrative that I wanted to emerge जो automatically होता है, जैसे फर्स्ट बुक में हुआ था, वो हो नहीं रहा था। So I said थोड़ा वेट कर लो, we'll see what happens. Because then I think you put yourself through some kind of a creative epiphany. कुछ आ जाए आपके दिमाग में, एक यूरेका मोमेंट आ जाए, कुछ बिजली कड़के, उसके बाद देखेंगे, we'll wait. One day in early January, by which time I was done with all the book tours of the first book, everything was done. I just said that's it. इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मुझे अगर किताब को मतलब उस if I have to continue pushing it, then there is no strength, inherent strength in the book. Makes no sense to throw the weight of whatever you have in terms of social media advantage to push the book beyond this. जो होगा दिखा जाएगा. So I was just thinking, and I had a brainwave out of the blue randomly when I was just getting ready for the court in the morning. And I quickly asked my research team to convene in the evening, and I told them that I think this is the way to go about it. They were kicked and pleased as sponge, because they said, now we know that this is going to be really powerful and relevant. क्योंकि फर्स्ट बुक जो है वो अच्छा सा एक थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड तैयार कर देता है, उसको अप्लाई करने का पूरा जो अपॉर्चुनिटी जो है वो इस बुक में आता है। And it comes about in such a way that almost everything that I said in the first book, without, let's say, prejudging it or without keeping my mind close to any ideas, it kept getting proved and proved and proved with every new literature. And इस book में मैंने इतने सारे PhD dissertations का प्रयोग किया है with hardcore literature.
including, and apart from that, primary resources. Then translations from Arabic works, translation from Persian works. Secondary, or did you get someone to No. translate? So there were books which had undertaken these translations. Okay. Therefore, saving me the trouble of having to commission something of this sort. And these were authoritative works themselves as far as those subjects were concerned. So once we got that treasure trove of material, apart from the material that we already had, now I said it makes no sense whatsoever to stick to the original plan. So from January on is when literally it picked up steam. And I was writing at a maddening pace despite my professional commitments. So each day would be spent in court at least until obviously 4:30, and after that briefings for the next day's hearings. I would start writing at about 11:30. It will go on till 3:30, 4 in the morning, and then the cycle starts. Dekhte dekhte, this book has become a 622-page book compared to the 483 pages of the first book. And in terms of sheer number of words, this is in the range of 270,000 words compared to 139,000 of the first book. And I've made sure that every line has a reference so that nobody can challenge me on facts. The first chapter itself has 214 references. The first book in all had 300 references or 350 references. And this 214 references, I've done this for 9 chapters. On an average, you take at least about 100 references per chapter. You're looking at nothing less than, so 900 references, but unique references, 500 at least. 50% conservatively speaking. And I've tied up international developments with Dravidianist movements, with the movement for Pakistan. Everything has been tied up. So the book is, according to me, stitching every possible dot in Bharat's history from 1740 to 1924, the end of the Khilafat. ये पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, ये जो लिंक करने का जो कीड़ा है आप में, ये जो लॉयर की उससे स्किल से भी आता है. करेक्ट. तो फर्स्ट बुक में जो मैंने किया था, उसको मैंने और भी बड़े कैनवस पे किया है फॉर द सेकंड बुक. But did you have to try something, or it was very visible to you कि ये सब कुछ इतना linked है? I went through creative hell, which is to say that अगर आपने कुछ पढ़ लिया, उसका सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि माइंड कहेगा और पढ़ो और इसको फॉलो करते जाओ. आप वहाँ पे जाके रुक नहीं सकते हैं. You can't stop that process. You have to go further. That led to so much of material that some of the chapters are as big as books. The biggest chapter in the book is 53,000 words, which I've split into multiple subsections with pictures to ensure that it is consumable. तो पिछले बार 11 chapters थे, and maximum chapter का size था maybe about 16 or 20,000 words. यहाँ पे the smallest chapter is about 13,000 words, the biggest chapter is about 54,000 words, the average is 25,000. But to make sure it's readable, what I've done is that I have broken it up into subsections. And the last time मैंने सिर्फ चैप्टर का टाइटल दिया था टेबल ऑफ कंटेंट्स में. इस बार सेक्शंस हैं ताकि लोग सीधा वहाँ पे they can zero in on that and read it with pictures which are relevant to it, like I did for the first book. So this book, according to me, while it may be bigger in terms of volume, is going to be an easier read in terms of consumption. तो लैंग्वेज पे जितना भी फीडबैक आया था, वकील की तरह इतने बड़े बड़े वाक्य मत करो भैया, पंक्चुएशन पंक्चुएशन पंक्चुएशन, इसको थोड़ा तोड़ के डालो. I've done that. And to sum it up, in a nutshell, in a nutshell में 4 पेज रहेगा. And then to put it simply, उसमें और है कि हनुमान जी की पूंछ बन जाती है. So all that I've tried to curb those tendencies. And I had a fantastic editor from Bloomsbury this time, Kripa Ramanji, and Sai Priya, of course. Both of them did a fabulous job. And then, of course, the managing editor of Bloomsbury, J Sai Deepak, stepped into the picture because they realized that this was seriously a mega project. And therefore, this is going to be a fairly interesting read. I'd say much more interesting than the first book. First book ने आपको देखने का एक लेंस दे दिया है, उसको हाथ में पकड़ के आप इसको पढ़िए.
and now you'll realize exactly भारत की जो history है कैसे play out हुई है. I personally guarantee that my readers had a lot of fun reading the book, which is to say my editors had amazing fun reading the book, and they kept sending me messages during the course of this thing saying it's going to be very, very difficult for people to factually counter this book. I've literally marshaled evidence like a lawyer in this, step by step with their quotes. But जो ये इतने citations हैं, इससे कुछ academic way में लिखने का या उस तरीके की writing लिखने का, because you didn't have that experience before. Correct. तो वो भी एक बहुत बड़ी सीख रही. तो what I've done is, मेरा core style of presentation is usually to the point. छोटा नहीं होता है, but I try to come to the point as quickly as possible to retain the attention of the reader. उसको मैंने और थोड़ा sharpen किया है इसमें. So while it may not be as academic in tone as the first book, I can guarantee one thing for a fact, that in terms of its rigor, it is no less academic. Which is to say, इसके प्रमाण जो है, the entire basis is academic. But I've tried to make it very, very relevant. So if you are purely a student of history, you will love this book. Or if you're looking at it from a constitutional perspective, you will ask yourself how myopic our approach to the constitution has been without reference to history. You'll be forced to do that. अरे पिछली बार जो पुस्तक थी उसमें एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी, राइट, कि भारतीय और इंडियंस में थोड़ा अंतर आ गया था, मतलब डिबेट होने लगी थी. जी जी जी. जो इंडियन माइंडसेट है और जो भारतीय मानसिकता जी, जी, है, जी. क्या इस बुक के कंटेंट पे वो डिबेट होगी या दोनों कन्वर्ज होंगे? I am not interested in any convergence on that subject. See, let me be honest here. मैं यहाँ पे किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ना मुझे किसी को परसुएड करना है. Those who want to disagree for a legitimate reason should continue to disagree. Those who wish to disagree only for the sake of disagreeing, more power to them. Those who want to find some common ground will find some common ground, क्योंकि आज के जितने भी हमारे डिस्कशंस होते हैं सोशल मीडिया पे on the strands within हिंदुत्व, इसकी झलक आपको इस बुक में दिख जाएगी. एंड ये पास्ट में हो चुकी है. We are all reliving the past in several ways, and you will find it. You will laugh and say, this is exactly what happened barely 100 years ago. And who won last time? Bharat may have lost because it sidelined a few voices. At least Bharat compromised on its cultural independence because it sidelined a few voices. At least my analysis until December 1924, which is where the book ends, is जो भारत के पक्ष में बात कर रहे थे उनका पलड़ा भारी तब तक नहीं हुआ था. 1924 तक, जहाँ पे ये खत्म होता है. 24 से लेके 47 तक क्या होता है ये देखा जाएगा. वो तो अगली बुक में होगा. So पिक्चर अभी बाकी है. Now one of the reasons I'm still keeping an open mind to that is there is so much that has happened in this entire period from 25 to 47 that इसको आप एक मोनोक्रोमैटिक लेंस से या फिर एक बास्केट के नजरिए से नहीं देख सकते हैं. कौन जीता, प्रोग्रेसिव्स या ये, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि every person who has taken a certain position has changed his position either with time or issue. ये fluidity जो है ये समझना बहुत ही important है. Then we will perhaps have some lessons to draw from that particular experience for the present. जब ये सोशल मीडिया में बेकार की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, ये मैं बेकार की लड़ाई नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ पे विश्वास है, किसी चीज़ में विश्वास है, beyond a point, how are you really pushing that agenda? By fighting on social media, I don't understand, unless you actually put your foot on the ground or you contribute some positive literature to it to explain your position. ये मेरा position है, इसका विश्लेषण ये है. जब आप इसको expand करके देखेंगे, magnify करके देखेंगे, this is the whole root of it. Fighting on a microblogging website, which at best gives you a character of 280 characters, let's say a duration of 280 characters, in multiple threads and tweets, beyond a point seems like a futile, useless exercise. That's one of the reasons I've realized that
I'm going to curb my own tendency to react to anything on social media. Only because one thing that Bhairapaji has said often is that Sahitya Krishi requires, let's say, silent work. I wish to try and subscribe to that as much as possible. अगर मुझे कुछ कहना है, आर्टिकल्स के द्वारा कहूँगा, या स्पीचेस में कहूँगा, जहाँ या लेक्चर्स में कहूँगा, या पुस्तकों के द्वारा कहूँगा. ट्विटर पे तभी कहूँगा जब मुझे लगता है कि it needs a short burst. Otherwise, that platform doesn't lend itself to nuance. इतने सारे मतलब misunderstandings हो जाते हैं. There is an ego that constantly works on Twitter from every side possible, makes really no sense. And you can't read the face. You can't read the face. क्या expression है, क्या expression है, tone क्या है, ये बिल्कुल. नहीं है. It's very important to at least look the person in the eye when he's talking, whether it's a video or whatever it is. You get nothing. And jokes can turn out to be insensitive to someone. ये हो रहा है. A lot of things happen, and which we can laugh it off at while we are talking. Exactly, in it depends person. on our mood also, Yeah. right? And the funny part is, you may actually end up having some common ground to meet with people. And the worst thing perhaps of being on that platform, I'm not going to quit the platform, but I certainly will tone down the way in which I operate, is you say something, there are two factions, or at least minimum two factions, each of which accuse you of something or the other. One says you don't criticize the government enough, and the other says his only job is to criticize the government. He has nothing else to offer. This is his way of securing attention from the public. I'm done with this. क्या ये कारण था कि जो पहली बुक आने के बाद, और मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के बाद तो बिल्कुल ही साइलेंट हो गए थे आप, और कोई टॉक्स भी नहीं किया, एकदम इसी पे फोकस रहा? Multiple things happened. एक तो more than anything else, I love my job as a lawyer. I love my profession a lot. I really love the process of it. I love preparing for arguments. I love strategizing. I love talking to the briefing teams. That's way more important than fighting with some person randomly faceless troll on Twitter. Exactly. It's more exciting. It's more exciting and it's rewarding. Let me be honest. Why should I even I get paid for Free it? में क्यों करना है? Free में क्यों करूँगा? The Joker says, if you're good at something, don't do it for free. Yeah. Why will I do it? Yeah. And two, someday I don't want to look back at my Twitter timeline and said, what childish nonsense did you go about doing? You prefer to see yourself as a serious lawyer, then at least don't resort to this. It shows you in poor light in your own eyes. So maybe that was one introspection. 3 is the book really required me to put my head down and read a lot and just commit myself to the discipline of writing after my work hours, because एक specific timeline था जो उसको निकालना था, and with so much happening which is so relevant to the book, I thought it was extremely critical that this book came out in time, ताकि लोगों को जब ये सब हो रहा है पता तो चले कि इसका बैकग्राउंड क्या है. जब ये सिर्फ beheadings को देख रहे हैं या कोई controversy को देख रहे हैं, what is exactly happening apart from the fact that someone's being chopped off? Did you have that 75 years of independence in mind? I would say so. I certainly would say so. Except that the celebration of the Khilafat as part of India's 75-year celebrations added seriously to my research and my need to write this book. Because I said something's amiss here. If you know the history of a particular movement and you still celebrate it as part of Bharat's Swatantrata Sangram, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो something's missing. गलत है, सही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम अपने इतिहास को कैसे अप्रोच कर रहे हैं उस पर तो 2-3 सवाल खड़े हो जाते हैं. तो मैं उस इशू को इस पुस्तक के द्वारा एड्रेस करना चाहता था इन अ सिस्टमैटिक फैशन. ट्विटर पे लिखना आसान है, ये क्या कर दिया, ये गलत है, फिर वहाँ से किसी को तकलीफ होगी, फिर यहाँ से किसी को तकलीफ होगी, मेक्स नो सेंस. से ठीक है, आपके पास एक तर्क है, एक आर्ग्यूमेंट है, प्रूफ कीजिए. ट्रेनिंग तो है वकील का, करो, प्रूव इट. Is it part of the second book? Yes, it is. Is it outside the scope of the second book? No. Does it take your narrative forward? Yes. So what is the point of not doing it? Do it. So I chose to go through a self-imposed hibernation, especially with what a lot of these, as usually primetime television channels, एक बार आप चले गए तो
I'm not blaming them. I don't wish to sound pricey. I am grateful for that platform because it allows me to say a few things. But I don't wish to be an expert on everything from gynecology to ethnology. I've said this even before. I'm not. I know few things. I wish to concentrate on those few things. So whenever they would call me saying, sir, इस पे react कीजिए, उस पे react कीजिए, I'd say, please, मुझे नहीं करना है. So I told them categorically, until the book is done, I will come only when it's absolutely necessary. And the only 2 times that I was prominently, I think, on the debate, or in fact 3 times, Kashmir Files, hijab, and that respectable lady, Nupur Sharma, for these 3 incidents. Apart from that, I tried to stay away. 1924 में पुस्तक खत्म हो रही है, 2024 की तरफ हम देख रहे हैं जी, और पिछले 1 साल में बहुत कुछ घटा है. कश्मीर फाइल्स की आपने बात की, हिजब कंट्रोवर्सी की बात की, नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी की बात की, और उससे पहले सीए से जब ये सारा शुरू हुआ, जी जी जी, इन सब को जब आप देखते हैं और ये काउ स्लॉटर की बात आती है, सेम डिबेट्स, राइट्स होते हैं, कोई हनुमान जयंती सेलिब्रेशन पे पत्थरबाजी होती है जी, वही जो 100 साल पहले हम पुस्तकों में पढ़ते थे, कुछ पुस्तकों में पढ़ते थे, वही आज भी देखने को मिलता है. सेम टू सेम, कुछ नहीं बदला है. करेक्ट. ये सिम्टम है, ये आउटवर्ड सिम्टम है, एंड ये आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रही है. लेकिन आप इसके पीछे की जो चेतावनी है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इसके बैकग्राउंड को ठीक से अभी तक आपने समझा नहीं है. तो उस कॉन्टिन्यूटी को एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने 1740 से लेके पूरा ये बैकग्राउंड दिया है. अचानक से अगर 1921 से लेके 24 तक राइट्स हो रहे हैं, अचानक से कैसे नहीं हुए? नहीं, अचानक से तो बिल्कुल हुए नहीं, रेगुलरली होता रहा. क्यों होता रहा? ठीक है, तो उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है कि नहीं, कोई मूवमेंट है कि नहीं, या कितने मूवमेंट्स हैं, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, व्हाट इज द ऑरिजिन, व्हाट इज द मोस्ट प्रॉक्सिमल कॉज? दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव ट्राइड टू एड्रेस. इज इट decentralized zealotry in that community, or is it something more organized? See, I don't think it is decentralized. The word to be used is federalized. It's a federal structure in a group. Community, I don't wish to use the word. I'd prefer to use the word group. Okay? And it's important for us to try and understand how pervasive is the sentiment, how widely shared is the sentiment, is it a fringe, is it mainstream, is there a scope for moderation, what is the meaning of that moderation, what reforms are you looking at, how can you reform certain fundamental beliefs, then what remains of that particular identity. These are realistic questions that we must force ourselves to ask ourselves so that we don't wallow in wishful, comfortable thinking. कंप्यूटर दे दिया, एजुकेशन दे दिया, सहूलियत दे दिया, मतलब स्कॉलरशिप दे दिया, हाथ सब्सिडी दे दिया, काम खत्म. आपको लगता है कि खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो आपने इतिहास को कैसे पढ़ा है और इतिहास से क्या सीखा है, ये सवाल तो खड़ा हो जाता है. लेकिन इसमें 2 बातें हैं. एक तो जैसे अभी मैं पंकज सक्सेना के साथ जो आपकी बुक का ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, पहली वाली पुस्तक, और दूसरी वाली पुस्तक इतनी लंबी कर दी है, अगर उनको देंगे दोबारा तो वो ये और आसान होगा ट्रांसलेट करने में. तो उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने 2 शब्द बोले, शत्रुबोध और स्वयंबोध. जी जी, करेक्ट. जो हिंदू कम्युनिटी में है वो मिसिंग है. करेक्ट. क्या वो हमारी भी कमी है ना? क्या 100 साल पहले और आज के भारत में कुछ बदलाव है, या वही कमियां हैं जो अभी पहले थी? History is being repeated. Unfortunately so. And the hope is that these lacunae, जो शत्रुबोध और स्वयंबोध की आप बात कर रहे हैं, उस गैप की पूर्ति के लिए ये पुस्तक जो है एक छोटा सा ईंट है कि हम आगे बढ़ें और इन चीज़ों को और बेहतर समझें. So the book is actually an attempt at that you are so poor at threat perception, at identifying challenges, and your ability to quickly organize yourself and respond to it. You will admire a lot of people who you otherwise perhaps would not
for the commitment to the cause, and for their ability to quickly organize without giving up their internal nuances and differences of opinion. How does a community come together to protect? On the other side or on the our side? Read the book. यार ये तो 1 महीना और वेट करना पड़ेगा. Read the book. And then you'll realize, never underestimate anyone. That's the first rule when you're trying to protect your civilization. No question of underestimating anyone. तो इस बुक को पढ़ने के बाद क्या सॉल्यूशंस भी कुछ मिलेंगे? तो मैंने बुक मतलब ऐसे तो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा होगा, बट कुछ समझ में आएगा लोगों को कि हाँ एक सॉल्यूशन ये हो सकता है. प्रॉब्लम के एनालिसिस में ही हमेशा सॉल्यूशन के बीज होते हैं, और मैंने वो किया है इसमें. प्रॉब्लम के एनालिसिस के दौरान ही मैंने सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की है इसमें. वो प्रयत्न तो किया है. एंड उसको जहाँ प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है उसी चैप्टर के अंत में मैंने उसका सॉल्यूशन टेंटेटिवली दे रखा है कि आप सोचिए कि क्या ये आप करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है बेहतर प्रोटेक्ट होगा कि नहीं होगा. ये सवाल मैंने वहीं पे उठाए, उसके जवाब भी देने की कोशिश की. बिकॉज यू सी, आई डोंट वांट टू पास ऑफ एज समवन हु हैज आंसर्स टू एवरीथिंग. आई श्योरली डोंट. आई हैव decent questions to ask and perhaps reasonable solutions to consider. Here I have tried to let's say flesh both of them out clearly. So this book will actually make the reading of history very, very relevant. You will not be able to read it as अच्छा तब ये हुआ. You will not be able to read it without saying अब क्या हो रहा है, ये तो अब हो रहा है, ये अब हो रहा है. क्या अंतर क्या है? एटीट्यूड में अंतर क्या है? हमारे रिएक्शंस में अंतर क्या है? द सेम ऑस्ट्रिच लाइक बिहेवियर. तो ये एक अटेम्प्ट है टू से इतने सारे महानुभावों ने अलग अलग सब्जेक्ट लिखा है. लाइक आई डिड इन द फर्स्ट बुक, आई सेड ब्रिंग देम ऑल टुगेदर एंड सी इसका क्या नैरेटिव बनता है. आई हैव गॉन टू रशिया, आई हैव गॉन टू तमिलनाडु, I have gone to Pakistan, I have gone to United States, I have gone to UK, I have gone to Bangladesh, I have gone to Eastern Bengal, I have gone to Eastern Bengal and Assam. All these places I have mentally visited as part of the writing of this book. I have connected everything. I have tried to, I have really tried to. So the hope is that once this entire panoramic view is clear, then you ask yourself, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? 24 years of the end of Khilafat resulted in partition of Bharat. That leaves you with questions and answers. डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि अगर सॉल्यूशंस की बात करें, जो आप कह रहे थे कि खिलाफत के बाद इट्स नॉट सो सिंपल, कि कुछ लोगों का चेंज भी हुआ, बट रिजल्ट तो देखिए चेंज नहीं हो रहा है ना. तो कुछ तो ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है. I'll tell you, so if you're a hardcore movie goer, especially जब आप historical drama देखने की कोशिश करते हैं, अंत तो आपको पता है क्योंकि हिस्ट्री घट चुका है. लेकिन जब आप when you're watching the middle of the movie, आपको लगेगा अब तो ये रुक सकता था, अब तो इसकी जो करवट है बदल सकती थी, अब ये क्यों नहीं हुआ. Every time I read the Mahabharata, I look for times and places where I ask, why couldn't the war have been prevented at this juncture, at this juncture, at this juncture? But you know you're moving towards the inevitable because it's already happened. That was my entire experience of reading and writing for this book, or writing this book. पार्टीशन के बाद तक, पार्टीशन के 25 साल पहले तो आपको दिखा कि यार यहाँ पे भी रुक सकता था, यहाँ पे भी रुक सकता था. What was happening? We had so much of time to stop it. हमने उन लोगों के मुंह क्यों बंद किए जो देख रहे थे कि हो क्या रहा है. That is the experience. The takeaway is, हिस्ट्री आपको मौके दिए जाता है, समय आपको मौके दिए जाता है, आप उसको पहचानते हैं कि नहीं, and what do you do of it, what do you make of it. Never blame time. Time gives you enough opportunities.
तो अभी क्या लग रहा है, इनएविटेबल क्या है, एक और युद्ध? मुझे नहीं पता. I am just saying it's another 100 years of khilafat. We are at a point when we can make the right turns, and I mean the right turns. So I hope we make them soon enough before the process of whatever is happening is irreversible. Because the book is going to be launched on the 23rd of August, which is a Tuesday of 2022. 21st of August 1921 was when the Malabar outage started, and it went on for 6 months. And I've dealt with that in significant portions of the book, and you should read it. 21 अगस्त 1922. 1921. 101 साल. तो जब आप देखते हैं कि जो नुपुर शर्मा के बाद हुआ, कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या हुई, उमेश कोले की हुई, और ऐसी ऐसी बहुत सारी हत्याएं हो चुकी हैं पूरे देश में, जब आप ये सब देखते हैं और रिस्पॉन्स देखते हैं हिंदू सोसाइटी का, आर यू सरप्राइज्ड और आर यू डिसअपॉइंटेड? आई एम ओनली डीपली concerned of our amnesia and concerned at the other side's lack of amnesia. Or wokeness. They are fully woke. They have always been alive to history, whereas we, I don't think, understand the meaning of history and its purpose. But do you think you talked about taking right turns. Do you think the right ingredients are in place? Because अगर right turn लेना है और आप जो बात कर रहे हो कि अभी भी वही situation है exactly, तो right turn लेंगे कैसे जो वो चीज़ें हैं ही नहीं present जिसके लिए जो चाहिए right turn लेने के लिए? The difference between, let's say, the situation 100 years before and now is information को पहुंचाना आज के डेट में बहुत ही आसान है, जागरूक करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपकी इच्छा और मंशा होनी चाहिए और एक विजन होनी चाहिए कि आप जागरूक करके उसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं और व्हाट यू विश टू अचीव. If somebody wishes to address legacy issues today, I dare say some of the legacy issues can be addressed, and it is not that much of a hard task. And I believe that some leaders at the national level have shown it's possible to address the problem. Let's just leave it at that. So therefore, I think it's a question of replicating that experience at a larger level within the means and the bounds of the Constitution. So it's all possible within the four corners of the Constitution? I would say so, because I think a document is always capable of being interpreted in the right way. And amended in the right spirit. Without the need for amendment perhaps at this stage. Really? I would say so. I am not saying that no amendments are needed. I am saying if you find yourself lacking in the will to amend, you can think of certain creative solutions which can be defended both nationally and internationally. But do you think the problem is only limited to understanding, the enemy and it's all the modus operandi and their how much alive they are to the history and our lack of it? Or do you think we need to do something more rather than just recognizing that and rather than just dealing with that, right? Do you think there is some kind of reformation or and not reformation, I shouldn't use that word, but कुछ जागृति जी जो आनी चाहिए? क्योंकि अभी सिर्फ पॉलिटिक्स तक जो हिंदुत्व की बात होती है सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात होती है. डज दैट नीड टू गो बियॉन्ड दैट? कल्चर में, आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में क्या वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी हैं? बिकॉज जस्ट पिटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट दैट एनिमी एंड होपिंग दैट एक बार वो हट हो गया तो सॉल्व सब कुछ हो जाएगा. None of our problems or challenges, if I may to give it a more optimistic spin, are single variable equations. So मैं किसी भी चीज़ को reduce नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो पक्का कहूँगा that politics is the last mile of Hindutva, not the birthplace of Hindutva. हिंदुत्व जो है
वो समाज में पैदा होता है, फिर जाके वो पॉलिटिकल लेवल में रिफ्लेक्ट होता है। आज के डेट में हमने पूरी तरह से इसको एक पर्टिकुलर डोमेन में सीमित कर दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम द गवर्नमेंट और अ पर्टिकुलर ग्रुप फॉर इट। I am saying that as a society, we are not able to understand the need for Hindutvite resistance at every level. That I think is missing. ये एक convenience हमने बना ली है कि सरकार बनाती है, अब वही डील करेगी हर चीज। Correct. This is not me giving a clean sheet or a clean pass for the failures of the government, especially in the recent past. Dare I say, in the context of the Nupur Sharma episode, specifically speaking. Or in the context of their inability to protect their own Karyakartas and Hindus in Bengal, or their inability to catch Bangladesh by the scruff of its collar for its treatment of Hindus. Okay, all this, I will not give the government a clean sheet on this. I may say the government has done quite a few things on other issues, but a failure in one particular subject is not to be compensated by success in another subject. You are limiting the discussion to one issue, and I'm saying इसमें इनका performance क्या है? नेट बैलेंस शीट में आप बोल सकते हैं कि ठीक है, ये खोया वो पाया, अल्टीमेटली प्रॉफिट है, वो सब बाद में देखा जाएगा, ये तो अकॉर्डिंग टू मी हिस्ट्री डिसाइड करेगी। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड एनी ऑफ दैट। बट जब बांग्लादेशी हिंदूज की बात होती है या बंगाली हिंदूज की बात होती है, या फिर लेट्स से द रैंडम किलिंग्स हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, देन इट इज एन एस्केपिस्ट अटेम्प्ट टू से इससे बाहर निकल के बाकी चीजों को देखते हैं जहां पे गवर्नमेंट को श्रेय दिया जा सकता है। दैट इज नॉट द वे टू डू एन एनालिसिस। Focus. Don't run away from this question. Because if you think you're being smart by running away from this question, tomorrow all of us are going to pay the price for it. This is not an ego battle on who gets the better in a particular argument. This is not a game of one-upmanship. It's a civilizational issue. It concerns me, it concerns you. So I think we should perhaps slightly give up any loyalist tendencies here and focus on being loyal to the civilization here and see what can be done better here. Assuming for a moment that this is a politically motivated discussion to try and bring a particular dispensation down, then I can still say be reserved about this, be let's say suspicious of my intentions. I'm clearly saying here I'm looking at only the interest of the civilization. जब हम संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं और ये पॉलिटिक्स से परे है, सवाल ये पैदा होता है या प्रश्न ये पैदा होता है कि आप पॉलिटिक्स को सभ्यता और संस्कृति के बचाव के लिए कैसे इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग कैसे करें। दैट इज द क्वेश्चन। सो देयर यू हैव टू हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन कि यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हैं, तब तो स्वॉट एनालिसिस ठीक से करना पड़ेगा आपको। सो आई वुड से द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आई थिंक the society needs to introspect and the state also needs to equally introspect as to whether it is taking its electorate for granted. Because clearly there is no opposition in sight. And all the more reason when an opposition is not in sight, a government that has been elected, not just for the development plank, but primarily the civilizational plank and the protection plank, it has a greater duty because there is nobody else to keep it in check except its own conscience and our vocal reactions sometimes, which may be important for all I know. मैं इसलिए ये भी पूछ रहा हूँ, पॉलिटिक्स का एक जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, जी, जो अगर हम 2004 से 14 की बात करें उसमें तो कुछ भी नहीं था, और अभी 2014 के बाद कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ फ्रीडम है। आई एग्री। कुछ फर्क तो 2014 के बाद आया है। Agreed. और उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है जी। वो जो काम करने की फ्रीडम है वो आपको मिलती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। करेक्ट। अब मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि सोसाइटी में जो जागरूकता है ना, वो आनी कितनी जरूरी है, जो आप होप करते हैं कि इस पुस्तक से आएगी जी। लेकिन मान लीजिए सरकार अगर कुछ ऐसा क्रांतिकारी कुछ करना चाहे, राइट, तो हिंदू सोसाइटी क्या उसके लिए तैयार है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मैंने इस पुस्तक को किसी सेवियर कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं लिखा है। मैंने इसको सिर्फ लिखा है मेरी समझ के लिए कि अगर मुझे किसी ने पूछा कि प्रॉब्लम कहाँ है या आपका पोजीशन क्या है, आई शुड हैव अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट द इशू। तो मैं इसको सोल्यूशन के तौर पे या फिर चाणक्य नीति के तौर पे किसी को नहीं दे रहा हूँ। I have no such aspirations, I have no such pretensions. But अगर कल सरकार कुछ करना चाहती है
जैसे मैं एग्जांपल सीए का एग्जांपल, करेक्ट, उसमें अपने जो अर्बन हिंदूज थे जी, उनका अगर आप देखें, जो इंस्टाग्राम क्राउड जिसको बोलते हैं, जी, उनका रिस्पॉन्स है नॉर्मल, जो जिसको कोई मतलब नहीं है ना, जिसको रेफ्यूजीज से, हिंदू रेफ्यूजीज से जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहने में कि क्या ठीक है ना, सबको आने दो। करेक्ट, समझ रहे हो ना? करेक्ट। सी उस इशू में देयर आर टू परहैप्स टर्मिनल्स टू दिस इक्वेशन। एक, गवर्नमेंट की तैयारी क्या है? जब आपने सीए को पारित करने का डिसीजन या निर्णय ले लिया, क्या आपने ये सोचा कि इस वो क्राउड का क्या जवाब देंगे जिसको उकसाने के लिए लोग बैठे हैं, वामपंथी बैठे हैं? क्या आपको ये नहीं पता था कि इनको पक्का उकसाया जाएगा? ये तो आपको पता होगा। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर इन पॉलिटिक्स, यू हैव बीन अराउंड, यू नो द नेचर ऑफ द बीस्ट। तो इसकी तैयारी कितनी गहरी होनी चाहिए थी? सिमिलरली सिविल सोसाइटी के कितने स्टेक होल्डर्स के साथ आपको बातचीत करना चाहिए था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके द्वारा आप इस इशू को, और लेट्स से यू गिव इट अ वाइडर डिसेमिनेशन एंड अ क्लियरर डिसेमिनेशन। प्रोपेगेंडा की बात नहीं हो रही है, जो फैक्ट है, जो पोजीशन है, ये बाहर जाना चाहिए। 3, वुड आई बी रॉन्ग इन सेइंग फैक्चुअली कि हर बार यहाँ पे आग लगने के बाद आप सोचते हैं कि इसको कैसे बुझाएं, एज अपोज टू आस्किंग योरसेल्फ इसको रोकें कैसे पहले से? सो इट्स बीन मोर ऑफ अ क्योर एज अपोज टू प्रिवेंशन, एंड दिस इज प्राइमरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड कम्युनिकेशन। वहीं पे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो when we have more than one such example, clearly there is a huge introspection or homework that the government needs to do on this front. But on the other hand, as a society, सिर्फ बटन दबाना आपका काम नहीं है और ट्विटर पे चलाना आपका काम नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया कि अगर आपने इस मुद्दे पे सरकार का साथ नहीं दिया या फिर आपने इस इशू को आपने डिफेंड नहीं किया, तो कल आपका जो स्पेस है वो और भी संकुचित और सीमित होता जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो then you also have to take enough measures. So I'll give you an example. So farm laws के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, where are the farmers who support the farm laws? Why are they not before us? I don't think the court should have asked that question at all. How does it make a difference? बाद में कोर्ट ने शायद कहा, या कोई सर्वे था जिसमें आया कि 94% exactly they agree with it, or at least 86% agreed with it. So that question was unnecessary. But I would say, जब आपको समझ में आ रहा है कि जो इसको अपोज कर रहे हैं वो तिरंगा उखाड़ रहे हैं, आप कुछ तो बोलिए कि ये हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है। आप कैसे ये कर सकते हैं? और भारत के तिरंगे के साथ हाउ कैन यू डू दिस? देयर शुड हैव बीन काउंटर मूवमेंट्स, इट हैपेंड, बट इट वाज अ बिट टू लेट। सो द सोसाइटी आल्सो, एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मुंबई में एक पैनलिस्ट थे, वो बता रहे थे उनके साथ एक मुस्लिम पैनलिस्ट थे, पार्टी हैदराबाद वाली पार्टी के मुस्लिम पैनलिस्ट जी। तो उन्होंने मॉक किया कि हमारे में 1 लाख लोग आए, राइट, हमारी रैली हुई थी एंटी सीए की, करेक्ट, और आपके में 10,000 भी नहीं आ पाए। करेक्ट। सो दिस इज लेस अबाउट सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर इशू और सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, बट मोर अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ वोकली इन द फेस ऑफ अ यूनाइटेड ऑपोजिशन। द मोमेंट आई मेक दिस पॉइंट, टेक इट फ्रॉम मी, कोई ना कोई ये कहेगा सोसाइटी पे ये जिम्मेदारी डाल के आप सरकार का बचाव कर रहे हैं, और अगर आप कहेंगे सरकार को ये भी करना चाहिए, तो कोई इस तरफ से कहेगा that why don't you tell that the government cannot do everything, especially when it has inherited a country after 70 years of Congress rule. How can the government do everything? दोनों ही पक्ष में और दोनों ही राय में there is an element of truth. That's exactly why I'm saying both of them, there needs to be a handshake at some level. But the government needs to take the lead only for one reason, because it is in a much better position to organize itself than the society. The society is large, it's vague, it's inchoate, not because it's a Hindu society, but that's the nature of a majority in any country. Minorities can coalesce faster because it's a smaller group, and there is a fear factor or fear psychology. I disagree. It is a problem of Hindu society. Hindus were minority in Kashmir also. तो मैं बताता हूँ. See, the point is, I'm not saying that the Hindu society lacks this particular issue, but there is a majority problem also here. I think the main problem comes with monotheism, and that angle is also. So the tendency to organize, वो है ना कि अगर कास्ट के ऊपर कोई हो, not with monotheism. The tendency to organize is better if there is an element of proselytization. It's got nothing to do with monotheism. हो सकता है. Okay. But अगर कास्ट की बात करें, मान लीजिए कोई कास्ट का ऐसा ऑपरेशन हो जाता है, तब तो राइट्स करने लगते हैं. Why? Because again, it's a smaller group to deal with. Therefore, there's a greater proximity to the identity. That's exactly what I'm saying.
the moment it becomes about the larger Hindu identity, you obviously struggle to bring all these strands together. Okay? I agree with that point. So therefore, on this side, the state needs to work, and on this side, the society also needs to work. But most importantly, those who say that they are working for the society and have no stake in power should stop deluding the Hindu society into saying that everything is the same, everybody is equal in terms of their approach to the supreme consciousness. ये झूठ बोलना बंद करना चाहिए हमें. Okay? Exactly. Because that is lulling people into a certain sense of complacence. इनको आप सुला रहे हैं जब इनको जागरूक होना चाहिए. आपका काम जागरूक करना है, सुलाना नहीं है. तो ये आप करना बंद कीजिए, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी थोड़ा जागरूक होगी. Why is that? If a particular, let's say, entity enjoys a certain standing and has a certain all India presence, notwithstanding all the good work that it may have done, when you say something, people take it seriously. That's a fact. So it only shows that you have a certain sense of responsibility that goes with your size and stature and longevity. तो आपको तब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा. आप इनको सुलाइए मत. इतने बिहेडिंग्स हो रहे हैं और आप सो रहे कि सो जा मुन्ना सो जा, ये थोड़ी होगा. That can't be the answer, no? So I say this without an intention to disrespect anyone, but I have the right to clearly say that perhaps you need to reconsider whether your course of action and your sense of duty is in the right direction. ये तो पूछना पड़ेगा. चलिए, जो बुक आएगी जी, होपफुली 1 महीने के बाद फिर से बैठेंगे. जी 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 जी. जो पहली बुक है उसका लास्ट में एक बता दीजिए क्या अपडेट है, कितना कॉपीज वगैरह. So, from what I understand, it's touching the 1 lakh figure now. Achha. Yes. Nice. And the expectation from the publisher is that at this point, these are by the way legal counterfeits और भी है. Counterfeit क्योंकि अभी छोटी पेपर बुक कहीं मिल रही है, पेपरबैक ऑनलाइन कितना मिल रहा है. हाँ, ऑनलाइन एग्जैक्टली. तो लीगल इज दिस. So everybody comes and tells me that's a proof of the fact that the book is done well. कि ये या इसके PDF कॉपीज बिक रही या हो रहा है. इट्स प्रूफ व्हाटएवर इट मे बी, नॉट दैट इट मेक्स अ डिफरेंस टू माय फाइनेंशियल्स एनीवे, सो फॉरगेट इट. द पॉइंट इज एज फार एज द सेकंड बुक इज कंसर्न्ड, with the launch of the second book we anticipate a further spike of 15,000 copies for the first book. That's natural, and clearly there's an umbilical cord between the two books. I have chosen to subscribe to the Marvel philosophy. इसको पढ़ना है तो उसको समझना है. चलो, भ्राताश्री बहुत बहुत धन्यवाद. और शीघ्र ही 1 महीने के अंदर फिर से मिलेंगे. जी जी. Thank you for writing this book. Thank you. And we wish you the best. Thank you. Very kind. Namaste. Thank you. Namaste.